हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित इंस्पायर मैथ। मेरा नाम अंकित। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन इक्वेशन क्वेश्चन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इन इक्वेशन एंड इन दिस लेक्चर यू विल ट्राई टू हैंड्स ऑन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So first problem on your screen, try to solve by your own. 2x minus 4 is less than equal to 0. 2x, just a minute. 2x minus 4 is less than 0 is equal to 0. Second problem, note down and try. Minus 3x plus 12 is less than 0. Third problem, 4x minus 12 is greater than equal to 0. These are the three questions. I hope you have tried. You can stop the video for 1 minute and try by your own. I am telling you the solution of these questions. First question, this 2x minus 4. We can take 4 onto the RHS side. This 2 into x, it will go मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ये 4 है आपका, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये आपका आ गया आंसर। इफ यू वांट टू पुट इट इन द सॉल्यूशन सेट, इट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। नंबर लाइन पर अगर इसी को मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता, देन व्हाट हैपन if I want to plot this solution on number line or real line. So real line कहाँ से कहाँ तक होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस इज आवर 0, ये 0 है, ओरिजिन आपका ये 2 है। Now my solution set which satisfy this inequality lies minus infinity to 2. It means 2 is included. Minus infinity to 2, I can denote it in this way also, like minus infinity to 2. This means this dark circle means this 2 is included. Clear? Moving to the next question, minus 3x plus 2 plus 12 is less than 0. We can take 12 to the RHS, it will be minus 12, multiply by minus 1 on both sides. You can see that the sign will be reversed. As I told you, in inequality, if you multiply with minus 1, then sign reverse. ये जो sign आपको less than दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? Greater than. Now x is greater than 12 upon 3. It will be finally x greater than 4. Clear? So if I want to write in the solution set, x belongs to 4 comma infinity. I hope this is clear to everyone. Moving to the next question, 4x minus 12. If you want to plot this x greater than 4, if you want to plot, so you can plot in this way. This is our number line, minus infinity to infinity, and this is 4, 0, this is 4, and I want to plot this solution set on this real line. Since 4 is not included, I will denote with the open interval, and from that it is this much. You can denote this one. Simple draw line and open interval here. You can get the solution on the real line. Clear? Next question on our screen is 4x minus 12 is greater than equal to 0. So you can try, it's very easy. All questions are very easy because I am taking the easiest one first. After that we will solve the complex one also. 4x minus 12, you can take 12 to the RHS. This will be 4 3s are 12. X belongs to 3 will be included because is equal to sign also will be included. I can draw on a number line. This is a number line.
minus infinity to infinity, this is 0, this is 3. Clear? Since 3 is included, so I can denote with the dark circle. From there it is completely from here 3 to infinity. Clear? So simply I draw with 3 with a dark circle. From here 3 to infinity I can draw in this way. Clear? So always remember a few things, like these questions are easy only when you understand the concept that I told you in the previous lecture. Next question on your screen, have a look. 7x plus 9 is greater than 30. 7x plus 9 is greater than 30. Now try by your own. इसको ट्राई करते हैं. ये प्लस का 9 है, राइट में क्या हो जाएगा, माइनस का 9. 7x ये हो गया 21 आपका. 7 इंटू एक्स है, डिवाइड में चला जाएगा. 21 by 7 it will be 7 3 the 21, it will be 7 x greater than 3, यानी कि x belongs to 3, infinity. इतना ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी है. Either you want to plot on a real line. If in a question or examiner ask you, please draw on a number line, you can draw on your number line also. But if it is not asked, then you can keep it like this also. Okay. तो क्लियर होगा बच्चों आपको. कहीं भी कैसा भी डाउट हो आप बेधड़क पूछिए, because you are here to ask. Let's solve some more problems. 5x minus 3. 5x minus 3 is less than 3x plus 1. 3x plus 1. Now see, minus 3 we can like टर्म को एक तरफ ले लीजिए और अनलाइक टर्म को एक तरफ ले लीजिए. मतलब लाइक को एक तरफ ले लीजिए, x को एक तरफ ले लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड ले लीजिए. अब ये प्लस का 3x है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x. और ये प्लस 1 है, यहाँ ये माइनस 3 है. व्हेन यू टेक इट टू द RHS it will be plus 3. 5x minus 3x, that is 2x less than 4. 2 into x, 2 will be in the denominator, multiply में divide में चला जाएगा, x less than 2. Clear? So we got x belongs to minus infinity to 2. I hope this is clear to everyone. If you want to draw on a number line, you can draw. This is minus infinity, this is plus infinity, 0, this is 2. So minus infinity to 2. You can draw in this way also. So this is the on number line, or you can say that real line. समझ आ गया? बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है. इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लाया हूँ आपके लिए. इसलिए इसको आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. जल्दी एक क्वेश्चन और देखिए आप. राइट डाउन 3x plus 17. 3x plus 17 is less than equal to 2 1 minus x. बहुत आसान है देखने में, आपको लग रहा होगा टफ, but it is very very easy problem. लाइक टर्म को एक तरफ ले लीजिए पहले. 3x plus 17 is less than 2 minus 2x. ये माइनस का 2x इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये प्लस का 17 RHS में ले जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 17. 3x plus 2x, that is 5x, is less than equal to minus 15. So x is less than equal to minus 15 divided by 5. It will be x less than equal to minus 3. 5 3 is 15. So our answer will be x belongs to minus infinity to minus 3, and minus 3 will be included. I hope this is clear. Clear बच्चों? If you want to draw on a number line, it is very very easy. I can denote it on a number line also. Like this is a minus infinity, this is infinity, this is 0,
I need to draw again. There is less spaces here. I need to draw first. तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है आपको, प्लीज फोकस। सबसे पहले आप माइनस इनफिनिटी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। -3 चाहिए तो -3 बना लीजिए आप, -1 -0 1 वॉट एवर एल्स। नाउ इट इज सेइंग दैट माइनस इनफिनिटी से कहाँ लेना है, माइनस इनफिनिटी से -3। नाउ यू कैन सी दैट -3 पर क्या है, क्लोज इंटरवल, मींस इट विल बी इंक्लूडेड। तो आप ऐसे डार्क सर्कल दिखाते, ओपन इंटरवल में क्या होता है ऐसे दिखाते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका -3 इंक्लूडेड है। सो दिस इज, ये जो मैंने बनाया है नीचे आपका, दिस इज ऑन अ रियल लाइन। कभी कभी आपसे रियल लाइन पर ड्रॉ करने को बोलते हैं, सो यू कैन ड्रॉ इन दिस वे ऑल्सो, इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। Coming to the next problem, try by your own, and if you have any doubt anytime, you can reach me, because Ankit Inspire Math is always ready to help you people in every tough situation in solving any numerical problem. Please follow our group. If you don't have any group, you can ask me in the chat also, like please add me in the group. I will add you, or you can call me anytime. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, आप लोगों को ट्राई करना है। कुछ से पहले 2x + 3 2 × 2x + 3 -10 इज लेस देन इक्वल टू 6x - 2। बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं करना, 2 2 4 4x + 6 -10 इज लेस देन इक्वल टू 6x - 12। लाइक टर्म को एक तरफ ले लीजिए आप, 4x - 6x, ये कितना हो गया, 6 - 10 -4, लेस देन इक्वल टू -12। अब देखिए 4x - 6x - 2x, यहाँ ये माइनस का 4 राइट में क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -2x इज लेस देन इक्वल टू -8। When you multiply with minus, then the whole sign will be reverse. It will be 8. 2x is greater than equal to 8. X is greater than equal to 8/2. It means x is greater than equal to 4. Finally, how much you will get? X belongs to 4 to infinity. Clear बच्चों? 4 से infinity. If you want to draw on a number line, just draw a beautiful diagram. -infinity to infinity, this is 0, ये 4 है आपका। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 4 इंक्लूडेड है, 4 पे ऐसा डार्क सर्कल बनाइए, 4 से इन्फिनिटी, बस ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको यहाँ ड्रॉ नहीं करना तो यहाँ कर लीजिए। कुछ बच्चे से ड्रॉ करते हैं, 4 पे करा और बस एरो बना देते हैं ऐसे करके, ये भी ठीक है, लेकिन आप इतना भी छोड़ देंगे तो वो भी सही है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक अभी तक हमने बेसिक सिंपल क्वेश्चन कर लिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टफ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे डबल डिनोमिनेटर के आपके क्वेश्चन होंगे। डिनोमिनेटर में कुछ इक्वेशन दिया होगा आपको एक्स वेरिएबल में, ऐसे डिनोमिनेटर में दिया होगा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उनको भी सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना सीखना है इनइक्वलिटी में, कैसे हम x का वैल्यू निकालते हैं दैट सेटिस्फाई द इनइक्वेशन। सो वंस अगेन देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं फॉलो किया, प्लीज फॉलो द प्रीवियस लेक्चर एंड देन कम टू दिस लेक्चर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू सो मच।